Chronicle of a Death Foretold. Ladies and gentlemen, welcome to the channel Father007. I'm Adnan Ayaz and we're going to talk about this particular novel, Chronicle of a Death Foretold. कुछ चीज़ें हैं उसको कवर कर देंगे उर्दू में और इंग्लिश मिक्स में चलेंगे जो पॉसिबल होगा मेरे लिए आप लोगों से शेयर करना. I'm going to deal with it. I'm going to explain it to you, share with you. If you really think it's useful, do help me out by liking it or subscribing my channel. Here we go. So इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझी हैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. Okay. अच्छा, The Chronicle of a Death Foretold. It was written by Gabriel Garcia Marquez. ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा नाम है जो मुझे प्रोनाउंस करते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है. अच्छा, Chronicle of a Death Foretold, इसका नाम स्पेनिश में है. Was published in 1981. 81 में publish हुआ. It tells in the form of a pseudo-journalistic construction. इसकी जो फॉर्म है वो एक जर्नलिस्टिक टाइप है, जैसे कोई रिपोर्ट लिख रहा होता है बंदा, तो उस तरह जो है वो ये लिखा गया है. The story of a murder of Santiago Nassar जो एक बंदा था जिसके बारे में हम पूरे नॉवल में पढ़ते रहेंगे कि उसका मर्डर हुआ, क्यों हुआ, क्या वगैरह वगैरह, किस तरह हुआ, टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे. तो और इसका मर्डर किया गया बाय विकारियो ब्रदर्स. ये इसी के बारे में पूरा नॉवल है, उसके मर्डर के ऊपर है, कॉजेज क्या हैं, टाइम क्या था, डिफरेंट चीज़ें उसको हम देखते रहेंगे. आगे चलता है, ठीक है. वन ऑफ दी अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो देखें. वन ऑफ दी अनआंसर्ड क्वेश्चन इन दिस बुक. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अनआंसर्ड हैं, जिनका अभी तक आंसर मिल नहीं पाया कि आखिर क्या वजह थी, क्यों हुआ ये सब. Who actually took Angela Vicario's virginity? Angela Vicario की जो वर्जिनिटी है वो किसने जो है उसको ली, किसने लूटी. You guys understand what virginity is, ठीक है. For the narrator is unsure. अच्छा, the narrator is unsure why she named Santiago Nassar as the one who committed the crime. अच्छा, ये भी राइटर को, नैरेटर को पता नहीं है कि एंजेला विकारियो ने सेंटियागो नसार का ही नाम क्यों लिया कि उसने जो है वो उसकी वर्जिनिटी को लूटा है, उसकी अकाउंट से दैट. ओके, तो उसका नाम ही क्यों लिया गया. Although it is suggested by gossip that she did it to protect the man who she loved. हालांकि ये भी कहा जाता था I'm sorry, कि उसने ये नाम इसलिए लिया ताकि वो अपने लवर को बचा सके. Alright, so the crime against Santiago would not only be done to him by the Vicario brothers, but also by all those in his community. अच्छा, ये सिर्फ विकारियो ब्रदर्स का ही काम नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं का ही जुर्म नहीं है कहते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी का ये जुर्म है. मेरी दूसरी वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया इसी टॉपिक पे, इसी नॉवल पे. इट इज़ अ शेयर विक्टिमहुड या शेयर्ड क्राइम है, ठीक है. यानी कि पूरी कम्युनिटी ने मिल के उसका कत्ल किया है, एक तरह से सब के सब उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उसके मर्डर के लिए. Alright, let's move on. It is also possible to read the book as a Kafka's love and crime story. अच्छा, ये जो है इस बुक को अगर हम किसी और पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमें काफका की लव एंड क्राइम स्टोरी भी लगती है. The beginning of the book is itself a variation of the start of the trial and the metamorphosis, both by Franz Kafka. अच्छा, ये काफका के जो दो नॉवेल्स हैं दोनों, ये द ट्रायल एंड द मेटामॉर्फोसिस, मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली. तो ये दोनों नॉवेल्स में बिल्कुल उसी की तरह ये लिखा गया है. अच्छा, ये राइटर जो था मार्केज जो था, गैब्रियल मार्केज, ये काफका से बहुत इम्प्रेस था, इन्फ्लुएंस था उसकी राइटिंग से बहुत. तो इसकी ये जो नॉवल है इसका उससे मिलता जुलता है, उस कई चीज़ें उससे आपको मिलती नज़र आएंगी. एज इट सेज हियर, both by Franz Kafka, Garcia Marquez himself acknowledges. अच्छा, Garcia Marquez जो वो himself acknowledges this influence. वो इस बात का खुद भी एडमिट करता है कि वो जो है वो काफका से इन्फ्लुएंस था काफ़ी. आगे चलता है. The story exhibits many of the magic realistic style. The reality is not completely real or realistic. It's magic realistic style.
मतलब मैजिक रियलिस्टिक स्टाइल में बताया गया उसको, चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट तरीके से बताया गया है. इट मेक्स ऑब्लिक रेफरेंसेस टू गॉड एंड क्लेवोयंस, मतलब ये कि गॉड के बारे में कुछ बातें बताता है, ठीक है. और क्लेवोयंस क्या होता है? इट्स क्या कहते हैं जो आई मीन फ्यूचर के बारे में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बता रहा होता है, समथिंग लाइक फोर सीन, इस तरह कुछ होता है. गैब के बारे में, जो आगे होने वाला है उनके बारे में कुछ चीज़ें बता रहा होता है, विजुलाइज कर रहा होता है डिफरेंट तरीक़ों से, तो इसको क्लेवोयंस कहते हैं. जस्ट गूगल दिस वर्ड, मुझे इसका प्रॉपर वर्ड जो उर्दू में भूल गया है, बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट जो मैंने अभी बताया, ठीक है. इट हैज़ अ मैजिक रियलिज्म एस्पेक्ट ऑफ रैप्ड टाइमलाइन, ठीक है. मैजिक रियलिज्म का एस्पेक्ट इसमें रैप्ड अप इन अ टाइमलाइन है, जो कि उस तरीके से इसको बताया जा रहा है. द मेन प्लॉट प्लेज आउट 5 टाइम्स. एक मेन चीज़ जो मेन इवेंट है, जो मेन प्लॉट है, वो 5 बार उसको देखा गया, उसको 5 बार डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है डिफरेंट एंगल से. इन ईच ऑफ द 5 चैप्टर, 5 चैप्टर्स हैं इस बुक में जो हमें समझ में आता है. एंड ईच ऑफ टाइम and each time information is given from a different individual in the community. और हर बार जो है वो हर किसी डिफरेंट बंदे से उस स्टोरी के बारे में पूछा गया है और बताया गया है, ठीक है. This allows for the storyline to portray the idea of fragmentation, thus bringing in this idea of reality and fantasy. ठीक है, इसमें fragmented जो है pieces of fragmented events of truth हैं, not complete truth. Okay, you can't actually figure out what the truth is, what the reality is. You can only find fragments of truth. ठीक है, आगे चलता है. The narrator's inclusion of personal judgment. अच्छा, इसमें नरेटर की अपनी पर्सनल जजमेंट भी है, as well as the events occurring many years after the drama unfolds, seems to breach the definition of a chronicle. तो इसको क्रॉनिकल का नाम दिया गया है, लेकिन जिस तरह इसको बयान किया गया है वो क्रॉनिकल है नहीं, क्योंकि क्रॉनिकल मीन्स समथिंग दैट इज बीइंग डन इन सीक्वेंस में कोई काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ हो रही है, तो इट्स टोटली दी ऑपोजिट. ये इसमें बहुत अपोजिट करके बताया गया चीज़ों को, एक चीज़ को पहले बताया गया, फिर उस चीज़ को दोबारा से बताया जा रहा है, डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट नरेटर है, और वही बात बताई जा रही है. तो इसमें लिंक नहीं है, क्रॉनिकल नहीं है, लेकिन नाम इसका क्रॉनिकल दिया गया है. ओके. The kaleidoscopic imagery found in the novel adds to this impression, and combined with the contorted chronological structure and the townspeople anticipations of Santiago Nassau's murder, right, erodes the plausibility of mere irresponsibility as an explanation of the tragedy. सारी चीज़ें मिलाकर और इसमें जो क्रॉनिकल नहीं है चीज़ें, वो सब सिर्फ इसी चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि they are all responsible for the murder of Santiago Nassar. They are completely responsible. Next चलता है. This incongruity fits with the magic realism style. It may be put down to fate. अच्छा, ये जो incongruity जो होता है, इसका मतलब होता है कि something inappropriate, कोई चीज़ गैर मुनासिब है, तो वो क्या करते हैं, fits with the magic realism style. अब ये किसकी तरफ इशारा करती है, ये बताती है कि ये नॉवल लिखा गया, बताया गया है मैजिक रियलिज्म स्टाइल में, ठीक है. और उसको तकदीर का भी नाम दे सकते हैं, समथिंग लाइक यू नो इट वाज बाउंड टू हैपन, जैसे वो कहते हैं कि इट वाज आयरनी, कहते हैं आयरनी ऑफ फेट, जिसे हम कहते हैं. द ऑपोजिट ऑफ अनलाइकली पावरलेसनेस, बिल्कुल ठीक है, अनलाइकली इंड्योरेंस is also present, as Santiago Nassar's stench permeates the town even after he dies. ठीक है. उसके अलावा हम ये फैक्ट देखते हैं कि उसमें सेंटियागो नसार के मरने के बाद भी जो है उसको लोगों को उसकी जो है बॉडी की खुशबू या उसकी बॉडी जो है वो फील होती है, नॉट लाइक अ गोस्ट, लेकिन उसको उनकी महक या उसकी खुशबू फील होती है कि वो अभी भी उसकी महक जो है हमारे इस पूरे टाउन में है, ठीक है. विच अगेन डिपेक्ट्स के जो है उनका क्राइम उनको याद आ रहा है, उन्होंने जो क्राइम किया मिलकर, जो शेयर्ड क्राइम था,
वो उन्हीं उसी को बार बार रिकॉल किया जा रहा है उसकी डिफरेंट चीज़ों से। यानी कि इससे क्या बताया जा रहा है कि उनके दिलों में दिमागों में अभी भी उसका मर्डर जो है अभी बैठा हुआ है, वो सरायत कर गया। इट हैज़ पेनिट्रेटेड इन द माइंड्स एंड दे कांट फॉरगेट इट समथिंग। और ऐसे ही होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि गलत होता है और गलत होता है, सो यू कांट एक्चुअली फॉरगेट इट वेरी इजीली। वो आपके इट hovers your mind, your head, आपके सर पे सवार रहता है। Anyway, the subtle intersection of human values and supernatural with the physical world is a hallmark of magical realism. Well, again, magical realism की बात हो रही है इसमें। अच्छा, फिर बुक के बारे में बताया जा रहा है। The book was adopted for the big screen in the Spanish language. Spanish language में लिखा गया Chronicle of Death FORETOLD 1987, ठीक है, 1987. An Italian-French Colombian co-production directed by Francesca Rosi, starring Ornella Muti, Rupert Everett, and Anthony Dallin. Not very important. If you want to include it, want to go for it, you can write it down. Yeah. So, in 1995, Garciala Daniele adapted it into the Tony Award-nominated Broadway musical of the same name, okay, which he also directed and choreographed. उसने खुद डायरेक्ट भी किया इसको और कोरियोग्राफ भी किया. Next, these are the characters हैं हमारे पास जो भी तीन थे. अच्छा, ये complete character sketch हैं, characters हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे नॉवल में पाए जाते हैं. You should go have a look on them. You can write something about all of them. आगे चलते हैं. इसमें themes कौन कौन सी पाई जाती हैं ये भी देखना ज़रूरी है. themes में होती है honor है, honor killing से हम देखते हैं. revenge है, sex roles हैं इसमें, sex के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. deception है, ठीक है, deception भी है इसमें. supernatural जैसे कि dreams वगैरह है. hallucination and premonitions, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं. ये themes हैं इसमें, ठीक है. इसके अलावा भी मज़ीद डिटेल है मेरी दूसरी वीडियो में. इफ़ यू वांट टू गो एंड नो फर्दर अबाउट इट तो दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा. देन वी हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? नरेटिंग द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज एन अननेम्ड सन ऑफ लुइसा सेंटियागो एंड द ब्रदर ऑफ मार्गरेट लुइस जेम एंड a nun. ठीक है, ये इन लोगों ने जो है वो स्टोरी को नरेट किया, इन लोगों से नरेट करवाई गई. हैविंग रिटर्न टू द रिवर विलेज आफ्टर 27 ईयर, 27 साल के बाद जब मर्डर होता है तो ये रिटर्न करता है, ठीक है, और फिर उनसे स्टोरी नरेट करवाई जाती है. द नरेटर ट्राइज टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स of the day that ends in the murder of the Santiago researcher. वो 27 साल बाद आता है. अब वो सारा का सारा जो जिस दिन उसका मर्डर होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, सारी चीज़ों को देखता है और फिर वो इस बारे में लिखता है. Typically, a first-person narrator gives his own point of view but does not know what other characters are thinking, an ability reserved for the third person. Omniscient or all-knowing point of view. इस तरह का point of view third person भी है इसमें. The writer bends the truth. अच्छा, rules क्या होता है कि narrator कोई एक स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें एक point of view यूज़ नहीं किया गया. The narrator कैसे? The narrator tells a story in the first person, yet he also relates everything everyone is thinking. एक तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी को नरेट कर रहा है, दूसरा वो कि दूसरे लोगों के ख्याल और जो वो सोच रहे हैं उनके बारे में भी बता रहा है, which is actually not the part of it, not supposed to be the part. आगे चलता है. इसकी नॉवल की सेटिंग कहाँ पर? इट टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल लैटिन अमेरिकन river village off the coast of the Caribbean sometimes after the Civil War. Civil War कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे होता है. Once a busy center for shipping and ocean-going ships, the town now lacks commerce as a result of shifting river currents. ठीक है, तो ये उसकी सेटिंग है. आगे चलते हैं. ये भी सेटिंग के बारे में ही बता रहा है. The events evolved over a 2-day time period. 2 दिन के टाइम पीरियड के बारे में की जो स्टोरी पूरी घूमती है. A wedding that has taken place the night before. ठीक है, जो कि शादी की बात हो रही होती है, जो कि एक रात पहले हुई होती है. One of the day murder, on the day of the murder. ठीक है, जिस दिन जो है वो मर्डर होता है उस दिन मोस्ट ऑफ द टाउन पीपल, टाउन के जो लोग, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, हैव हैंगओवर. वो सब क्या होते हैं, प्रीवियस डे एक पार्टी हो रही होती है तो वो सब उस पार्टी में खूब शराब पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है.
एंड फ्रॉम द वेडिंग रिसेप्शन, और वेडिंग रिसेप्शन जो होता है उसको वेडिंग रिसेप्शन के हमारे नाम भी दे सकते हैं, पार्टी का जो भी देते हैं हम, तो उसमें सब हैंग ओवर होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते जो उसको बचा सकें, यू नो उसको हिंट दें या उनको या प्रॉपरली स्टोरी को नरेट कर सकें, बिकॉज अ विजिट फ्रॉम द बिशप इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि अच्छा क्यों ऐसा था, क्योंकि बिशप जो है उसका उसका उसको आना था, ही वाज एक्सपेक्टेड, हाउएवर अ फेस्टिव एयर प्रिवेल्स। अब वो पार्टी वाली बोली जो है फ़ज़ा वहाँ पे पार्टी वाला पूरा माहौल था वहाँ पर, हर वक्त हर टाइम, तो इसीलिए किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। आई मीन दे नो इट वाज गोइंग टू हैपन, ये भी एक चीज़ है। एनीवेज आगे, Garcia Marquez said in an interview, the area is soaked in myths brought over by the slaves, mixed in with Indian legends, and Andalusian imagination. The result is a very special way of looking at things, a conception of life that sees a bit of the marvelous in everything. और ये उसके खुद का कहना है, उसने इंटरव्यू में कहा था, और मुझे तो प्रॉपर्ली पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन आपको आ गया तो ज़रूर मुझे बताइएगा मुझे। आगे चलता है, कोरस कोरस की बात हो रही है। इट वाज द लास्ट टाइम, अच्छा ये अब इसके क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटो, इसके स्टाइल के बारे में बात की है कि स्टाइल कैसा, कोरस के बारे में बताया जा रहा है। इट वाज द टाइम व्हेन ही शी सॉ देम, अब कब किसने उसको कहाँ देखा ये है। अच्छा इसमें अब क्या है कि रेफरेंसेस दिए गए कि आपका अगर नावल पढ़ा है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द नॉवल, तो दिस इज रियली गोना हेल्प यू। आप पेज नंबर 8 पे देखेंगे, पेज 19 पे ये चीज़ है, पेज 67 का इन्होंने दिया है, और पेज 104 इन्होंने सब ने अलग अलग बताया कि उन्होंने जो है उसको लास्ट टाइम कहाँ कहाँ देखा था, और ये पेज के रेफरेंसेस हैं। इफ़ यू नीड टू हैव अ डीपर लुक इनटू इट, इसको देखें जो मैंने आपके सामने लिखा है, और फिर नॉवल को देखें, यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेस, फिर घरों के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। सबसे पहले सैंटियागो नसार के बारे में बताया गया पेज 10 पे, एंजेला विकारियोस के घर के बारे में, फिर ओल्ड ज्यूस प्लेस के बारे में बताया, ब्याड्रो सैन रोमन्स जगह के बारे में पेज नंबर के साथ बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, असल में इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा मेरे लिए, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्गर एंड बोरिंग, ठीक है। उसमें फिर स्टाइल के बारे में मजीद बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन नरेटर रिलेट्स टू गार्सियास मार्क्वेस लाइफ, लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। लुइसा सैंटियागो, apologies, लाइफ मर्सिडीज रिकॉल्स पेज नंबर 31 पे है। फिर जनरल पेट्रोनियो सैन रोमन जो है उसके बारे में उसने बताया फ्लाइट are to shake hands with the man who gave the order for the Gernaldo Marquez to be shot in the back, ठीक है। अब ये सारे उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं उसकी लाइफ के बारे में, ठीक है। ये आप लोग if you want to have a look at it, just pause the video here and note down the important information that is relevant to you or for you, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा इसमें 4 साइड्स हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें पहले बता दी गई थी आपको। नॉवल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्यूचर के बारे में बता रही हैं, जो कि डिफरेंट लोगों ने हमें बताई। सेंटियागोज ड्रीम था द नाइट बिफोर ही वाज मर्डर्ड, ठीक है। दैट्स व्हाट माय वेडिंग गोइंग टू बी, दैट्स व्हाट माय वेडिंग गोइंग इज गोइंग टू बी लाइक, यहाँ इज मिसिंग है, ठीक है। उसने हमें वेडिंग के बारे में बताया था कि मेरी वेडिंग ऐसी होगी, ठीक है। उसे ओनली अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द अनफॉर्चुनेट वेडिंग, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ हिज डेथ, और उसकी जो है वो मौत से पहले जो शाम होगी उसके बारे में बताया। It was very clear vision, दिव्याना फ्लोर told me, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे चलते हैं। No one could understand such fatal coincidences, ठीक है। It was a breath of the Holy Spirit, ठीक है। वो उसके बारे में फेट और रिलीजन की कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लुइसा सेंटियागो had
पावर ऑफ डिविनेशन, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को जान सकती थी, वो पहले से चीज़ों को बता देती थी, यार ऐसा होने वाला है। I mean, she could tell this could happen in the future. She had some power, little bit of that power. ठीक है, disdain that prize of destiny. It was for such an unforeseen reason that the investigator who drew up the brief never did understand it. अच्छा, yes, he never forgot the fatal drink Pedro Vicario offered him. ठीक है, ये रिलीजन के बारे में है. Here again, the report said to look like a stigma of the crucified Christ. You know, अब उन्होंने इसमें क्या किया कि सेंटियागो नुसार जो होता है उसकी लाइफ को जो है वो क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट से जो है वो सिंबलाइज किया कि यार उसको भी उनको भी जो है वो क्रूसीफाई किया गया था, कहता है. और तो इसी तरह सेंटियागो नुसार को भी जो है वो क्रूसीफाई किया गया, तो क्यों मारा गया उसको, ठीक है, सब लोगों ने मिलकर मारा गया. वो शेयर क्राइम, shared crime or victim. Mean to blame. ठीक है, to give order to the chain of many events that had made absurdity possible. ये है उसमें. He was so perplexed by the enigma. He was so perplexed. Life should make use of so many coincidences. Fatality makes us invisible. ये चीज़ है. और इसमें फिर डेट्स वगैरह के बारे में, एग्जैक्ट टाइम जो है उसके बारे में जो रेफरेंसेस हैं वो दिए गए. In the course of the investigations for his chronicle, 5 hours before the killing, according to what they told me years later, Pablo Vicario confirmed several times to me, Santiago Nasser went into the house at 4:20. ये सारे टाइम वगैरह एग्जैक्ट टाइम बताया गया उसके. उसके बाद chronicle है, Father Amador confessed me many days later. Years later, when I came back to search out the last pieces of testimony for this chronicle, several people helped me look for 20 years later in the palace of justice in Rihaka, or Rihasha. Let me rescue some 22 pages filled from the more than 500 that the brief must have contained, right? मुझे कुछ समझ में नहीं आई वाला क्या है, I don't know. Anyways, if it is really helpful for you, keep reading it, keep going on through this, and you will definitely enjoy. अच्छा, उसमें लीगल प्रोसेस हुआ है, उसकी जब डेथ हुई तो उसके बाद कौन कौन सी लीगल प्रोसेस किए गए, क्या क्या हुआ, वो सब इसमें रेफरेंस के साथ किया. इन्वेस्टिगेटिंग जज who came from Raihoka, someone who was never identified, had shoved an envelope under the door. अच्छा, वो उसके मरने से पहले किसी ने उसके घर के दरवाजे के नीचे से एक जो खत जो है वो नीचे से खिसका दिया था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, जो सेंटियागो नसार है वो पढ़ नहीं पाया. ठीक है, तो किसने खिसकाया था ये कोई नहीं जानता. She declared to the investigator, right? I don't know. It has never been well established how they had met. और वो मिले कैसे थे ये भी नहीं पता. All the virgins agreed that, अब सारे के सारे जो 5-10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो किस बात पे इत्तेफाक करते हैं, this is still a process. किस बात पे वो agree करते हैं. The lawyer stood by the thesis of homicide in legitimate defense of honor. ये तब लॉयर ने क्या डिसाइड किया कि ये क्या था, ऑनर किलिंग थी. इट वाज ऑनर किलिंग, ऑनर के तौर पे इसको कत्ल किया. अच्छा, उसके विद द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द फैक्ट्स, और जो फैक्ट्स है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उससे क्या क्या चीज़ें निकली. ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर हैड मेड स्केचेस ऑफ देम इन द ब्रीफ. अच्छा, उसके जो है वो स्केचेस बनाए हुए थे इन्वेस्टिगेटर ने. इन देयर, अब ये जो इन्वेस्टिगेट किया था जिस बंदे ने सेंटियागो निसार के मर्डर के बारे में, ये उसके बारे में बता रहे हैं, उसके पास क्या क्या चीज़ें थी. ठीक है, in the separate statements to the investigator, I'm sorry, alright, the unforgiving autopsy, और फिर उसमें autopsy की गई जो बुरी तरह से जो है उसकी autopsy की गई, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी. ठीक है, एक तो उसको कत्ल किया गया, ऊपर से autopsy उसकी की गई.
then as a usual piece of evidence, कौन सी चीज यूज हुई? The cause of death had been a massive hemorrhage sorry. ये उसकी डेथ का कॉज क्या था, वजह क्या थी? बहुत सारा खून उसका बहा था, because he was stabbed or shot, whatever they may call. ठीक है, तो नॉवल में कहते हैं he was stabbed, and in the movie they showed it as he was like shot in the back. तो कहते हैं उसके कॉज ऑफ डेथ जो था वो था बहुत सारा खून बहना, बहुत सारा ब्लीडिंग जो है उसके कॉज ऑफ डेथ थी. I think these are things, and that's what I could bring to you, my little effort. If you think it is in any way, some way useful for you, to you, do drop a like, and if you haven't subscribed to my channel, go on and subscribe to my channel for further helpful videos. Thank you very much. Have a wonderful day.